Top of the hour, let's get you the details of the investigation that has been ongoing over the Hathras tragedy. As far as the UP police is concerned, they have now arrested at least 6 members of the organizers of this committee that was responsible for the management of this satsang or this religious gathering in UP's Hathras. They have been identified as Ram Kumar, Upendra, we have Megh Singh also, Mukesh Yadav and Manju Yadav, Mukesh Kumar and Manju Devi. All of them are the individuals who have now been held by the police. In fact, when it comes to the politics taking place, the leader of the opposition and of the Lok Sabha, we are looking at Congress leader and MP Rahul Gandhi, also arriving in Hathras a short while back. He first visited the families of the victims, their kin in Aligarh, before he headed to Hathras, a distance of almost an hour, where he met with more victims. First up, here's what he said after meeting the kin of the victims who unfortunately lost their lives. दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का सर परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश। Well, that's Rahul Gandhi speaking to the media right after he has been meeting with the kin and the victims there of this tragedy, where unfortunately the loss of lives has been over 120, and he's now been saying that there should be appropriate, of course, when it comes to the compensation that has been announced both by the UP government and by Prime Minister himself. Priyank, tell us more about this meeting that happened. Rahul Gandhi, being the leader of the opposition, also visiting the victims, their kin, and of course extending his condolences. Yeah, certainly Rahul Gandhi met the victim family, and he has not given any kind of political statement, while he had also requested the Yogi administration to expedite the process of giving compensation. But very shockingly, a few of the victim family who have lost their loved one were very much angry with this self-proclaimed godman. We spoke to Subhash, who was Munni Devi's son. He says that the responsibility of these deaths is certainly in the hand of this particular self-proclaimed godman. On the other side, Rahul Gandhi only spoke about that how the process of giving compensation is generally get delayed, and in this particular case, he has requested the state government to provide the compensation to the victim's family as soon as possible. Well, let's